So, good afternoon. Today we will see the case of brain hemorrhage with paralysis, hemiplegia of right side, and multiple complex fracture at the head of femur. So, this case is a very prestigious case for me क्योंकि it was challenge for me क्योंकि इतने 92 years old lady goes into coma and she was near about 11 to 14 days she was under allopathic treatment, and they said that no hope. So after that patient came to me. So this case, when I present in productive homeopathic international productive homeopathic conference, it gives me a big honor. It gives me Bonninghausen award. So this case gives me honor, lot of patience, and the best thing is the deep knowledge of pathological cases, deep knowledge of how to handle the emergencies, how to treat the comas, brain injuries, such cases. Allopathic doctor always say the only one solution is there, that is the operation. But in 92 years old lady, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 92 ओल्ड लेडी में ऑपरेशन करे, है ना? दैट्स व्हाई दे रिजेक्ट द पेशेंट और मरने के लिए घर पे लेके जाओ, है ना? सो ये केस बहुत ही अच्छी केस है, इसमें से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. दिस वाज चैलेंज. सो वी विल स्टार्ट द केस. Just wait for 1 minute. यस, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. So good afternoon. So this is not my result. It is result of due to productive homeopathy, the teaching of Dr. Praful Vijay Karsa. लैपटॉप स्लो हो जाता है, पता नहीं. केस जब भी रहती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है.
Okay, so first we will see the golden rules of homeopathy. तो हमने जब बुक स्टार्ट किया था प्रोडक्टिव होम्योपैथी का, मॉडर्न साइंस एंड होम्योपैथी, तो इसमें हमने स्टार्टिंग में देखे थे रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ होम्योपैथी. सो हु वुड लाइक टू से अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ होम्योपैथी? हु विल शेयर? Who will share the golden rules of homeopathy? Please unmute himself and share. Yes, who will share? Hello, sir. Yes. It's a law of stimulus, law of dynamics, then law Yes. of minimum dose, Yes. law of drug dynamization, Yes. and theory of chronic disease, Yes. and theory of recovery. Yes. Very good. तो उसमें सबसे पहले है be a minimum prescriber, right? It is one of the golden rule of homeopathy. So be a minimum prescriber. तो मिनिमम प्रिस्क्राइबर की बनने के लिए, मिनिमम प्रिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या जरूरी है, किस टाइप का, कौन से लॉज का, कौन सी बातों का नॉलेज होना जरूरी है. यस. तो बी अ मिनिमम प्रिस्क्राइबर, दैट मीन्स लिस्ट प्रिस्क्राइबर इज द बेस्ट प्रिस्क्राइबर. जो डॉक्टर हैनेमन ने कहा इन ऑर्गेनॉन, who will prescribe the list is the best prescriber. For that, be aware of when to prescribe and when not to. Yes, when to prescribe and when not to. So ऐसे बहुत से कंडीशंस आ जाते हैं हमारे पास. हम जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तो ऐसे बहुत से कंडीशंस आते हैं जहां हम हैंग हो जाते हैं कि अब क्या करना है. पोटेंसी चेंज करना है, मेडिसिन चेंज करना है, रिपीट करना है, या फिर रीकेस लेना है, रीकेस टेकिंग करना है. तो ऐसे वक्त हम हैंग हो जाते हैं कि कुछ समझता नहीं कि अब क्या करें. सो बी अवेयर व्हेन टू प्रिस्क्राइब एंड व्हेन नॉट. तो ये जस्ट एक्यूट केस आई तब भी ये प्रॉब्लम होता है, जब क्रॉनिक केसेस का हमारे पास ट्रीटमेंट चालू होता है तब भी ये प्रॉब्लम होता है. तो मोस्टली क्रॉनिक केसेस में तो हम एसएल दे के पेशेंट को वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन इन एक्यूट केसेस how to prescribe on what basis of symptoms, on what basis of disease. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि डायरिया की केस है, प्रिस्क्राइब करना कि नहीं करना. एक्यूट फीवर की केस है, प्रिस्क्राइब करना कि नहीं करना. कोल्ड कोराइजा है सिंपल, या फिर एक्यूट एग्जासर्वेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज लाइक अस्थमा, ऐसी कंडीशन का पेशेंट आता है तो प्रिस्क्राइब करना कि नहीं करना. फिर ऐसे टाइम पे किस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है. हमें स्टेट सिमिलिमम देना है, एक्यूट रेमेडी देना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल देना है. तो मोस्ट जो भी जितने भी कंडीशंस होते हैं, दैट इज द एक्स्ट्रा एक्यूट एग्जासर्वेशन, ऐसे कंडीशंस में कभी भी स्टेट सिमिलिमम प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए. वहां पे ऑलवेज take the case in detail and afterward prescribe the GCS. तो इसीलिए डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि be aware when to prescribe and when not to. Then if general parameters improve or if general parameters not improve, तो ऐसे वक्त क्या करना है. अगर जनरल पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, लाइक एपेटाइट, थर्स्ट, स्लीप, स्टूल, स्टैमिना, ये इंप्रूव्ड है,
तो हमें क्या करना चाहिए? Without, if patient comes first time or patient is on chronic treatment, तो ये क्लियर है कि क्रॉनिक ट्रीटमेंट का पेशेंट है तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इट इज द इंडिकेशन ऑफ आवर राइट रेमेडी, राइट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी. If patient comes first time, then his general parameters already improving by itself, then wait and watch, give the SL and take the trade. ऐसे पेशेंट में ओनली SL देके पेशेंट को वेट एंड वॉच करवाना एंड ऑब्जर्व द पेशेंट और पुट इन ऑब्जर्वेशन. तो जनरल पैरामीटर्स ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल पैरामीटर्स को किस तरह से हम देखते हैं. जनरल पैरामीटर्स अगर पेशेंट के इम्प्रूव हो रहे या फिर नहीं हो रहे तो ये हमें सक्सेस भी दे सकता है और फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है. इसलिए ऑलवेज concentrate on general parameters of the patient in follow-ups also or in new patients also. Agar acute in new patient with acute conditions only. Yes. Then defensive mechanism of body is working to cure itself. Yes, ये वही कंडीशन है acute condition. अगर लूज मोशन का पेशेंट है, पेशेंट को 2 days बिफोर 10 लूज मोशन थे और आज 5 है, लेकिन उस दिन पेशेंट बिकॉज ऑफ वीकनेस आ नहीं सका, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा है इसलिए आया, लेकिन ही वांट्स मेडिसिन, तो ऐसे वक्त हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, ओनली गिव द SL. यस, सो बिकॉज रिस्पेक्ट द हिज मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म, respect the internal curative immune mechanism of man. Yes, that is the his RMO. उसे हमें रिस्पेक्ट करना है, उसके इम्यूनिटी को, उसके रेजिस्टेंस पावर को, उसके वाइटल फोर्स को रिस्पेक्ट करके हमें वहां डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे सेल्फ हिडन. सर आवाज येत नाहीये, तुम्ही म्यूट वर आहे. सॉरी, ये लैपटॉप जरा तकलीफ दे रहा है. The second rule, that is be a single remedy prescriber and single dose prescriber. Why? Because we treat the man in disease and not the disease in man. अगर मैन को ट्रीट करना है तो हमें उसके वाइटल फोर्स को मेडिसिन देना है, और वाइटल फोर्स एक ही होता है हर पर्सन में, हर ह्यूमन बीइंग में. तो एक वाइटल फोर्स को ट्रीट करने के लिए इट नीड्स ओनली वन रेमेडी एंड ओनली वन डोज. So perk up the immunity to fight the disease. Yes, हमें only उसकी immunity increase करना है, immunity को stimulate करना है. That immunity will cure the disease. Cure takes place by reaction and not the action. Yes, cure takes place by reaction, not the action. इसीलिए डॉक्टर हैनीमन कहते थे, विजयकर सर भी बार बार कहते कि we never treat the disease, we treat the
vital force. We stimulate the vital force, and that vital force will cure the disease. Yes, and that is called the reaction of vital force, not the action of our medicine. Yes. Similia similibus curantur. Yes, we always need a similar remedy, perfect similar remedy. That is called similia similibus curantur. In aphorism 66, Dr. Hahnemann written about this golden rule: be a single remedy and single dose prescriber. In again aphorism 272 and 274, he write about this golden rule. So we will see aphorism 66. So 66 क्या कहता है? A small dose of every one of remedy. Yes, a small dose of every one of remedy certainly produces a primary action. Yes, this is the primary action of prescribed remedy that is perceptible to a sufficiently attentive observer, but the living organism employs against it only so much reaction. Yes, second, that is called secondary action. जो हम बोलते हैं ना कि our medicine never cure the disease, only reaction of remedy, that is the secondary action, as is necessary for the restoration of the normal condition. अगर हमें restoration करना है तो हमें repeated dose नहीं देना है, हमें multiple remedies नहीं देना है. Only one dose of single remedy will stimulate the vital force, and that vital force react. That is called the secondary action of remedy. Yes. So conclusion of this aphorism 66: from the smallest homeopathic dose of medicine employed in treatment, the secondary action of the vital force merely shows itself in the restoration of the balance of the health. Yes. So only smallest dose. Dr. Hahnemann says the smallest dose of homeopathic medicine, that is the single dose and single remedy. In aphorism 272, such a globule, a single globule will cure the disease. Such a globule placed dry upon the tongue. देखो, a single dry globule placed upon the tongue is one of the smallest doses. एकदम simple small dose for a moderate recent case of illnesses. Here, but few nerves are touched by the medicine will produce a far more powerful medicine for the use of several days. Few days भी नहीं कहा है उन्होंने, several days. उसके एक्शन देखो, several days तक रहेगी. Yes. So simple dry single globule will cure, or a cure, that means restoration of health. It will touch the nerves, and that nerves get stimulated, and afterward disease will cure. In aphorism 274, as the true physician finds in simple medicine, administer singly and combine, he will mindful of the wise maxim that yes, it is wrong to attempt to employ complex medicine. देखो, it is wrong to attempt to employ complex medicine. Hahnemann ने कभी नहीं कहा है कि complex of medicines करो, मतलब 2 medicine 3 medicine combine करके दो, repeated dose दो. Never, he said. Never think of giving as a remedy but a single simple medicinal substance. Single simple medicinal substance. Single medicine, single dose, और वो भी simple medicinal substance का है.
or single simple medicinal substance, that means the potentized medicine only. So it is yet impossible to foresee how two or two and more medicinal substances might, when compounded, hinder and alter each other's action. देखो, जब कोई भी डॉक्टर 2-3 मेडिसिन कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो एक में के एक्शंस को हिंडर करते हैं, अपोज करते हैं. Yes. So alter each other's action on the human body, and because on the other hand, a simple medicinal substance when used in diseases, the totality of whose symptoms is accurately known, renders efficient aid by itself alone. देखो डॉक्टर हैनेमन ने ये भी कहा है, the simple medicinal substance was used in diseases, the totality of whose symptoms is accurately known. मतलब well proved medicines ही हमें prescribe करना है, rare medicines rarely prescribe. तो जो वेल प्रूव्ड मेडिसिन है, जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, अगर हमने उसमें भी उतने मेडिसिन में भी प्रैक्टिस किए तो सक्सेसफुल प्रैक्टिसर बन सकते हैं. यस, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर हैनेमन ही कहते हैं कि whose symptoms is accurately known renders efficient aid by itself alone. Yes, if it is, it be homeopathically selected. So बाबांना ड्रेस घालायला लाव अशोक. तुला कोणतंच काही पाहू नको, आपल्याला काम आहेत ना अशोक. कॅन्सल करायला लागेल प्लॅन. झालेलं फक्त ती तयारी करताय. the conclusion: only one single simple medicine should be given to the patient at one time, not a patent, not a complex of medicines. Yes, इतना clearly हैनेमन ने लिख के रखा है, बोला है in Organon of Medicine. So now after the golden rule, we will see the case of brain hemorrhage. See the 92-year lady, widow lady. अगर The screen is not visible. yes, स्क्रीन Screen is दिसत not नाहीये सर. visible. one. सेकंड स्लाइड पासून दिसत नाहीये सर. ओनली 2 स्लाइड सीन. अरे यार, मैसेज डाला करो ना. ये दिखा था ना आपको. हा, याच्यानंतर दिसलं नाही सर काही. ही सेकंड दिसली फक्त बस. आपको एफोरिज्म नहीं दिखे? नो सर. No, sir. Sir. ओके, तो मैंने 66 एफोरिज्म नंबर 66 के बारे में कहा, उसके कंक्लूजन के बारे में कहा, देन 272, देन 274. ओके, सो अभी दिखे ना स्लाइड्स? Yes, sir. यस Yes, Yes, sir. यस. Yes, sir. नाउ सी द पेशेंट. ये पेशेंट आपको कैसा दिख रहा है? ये लाइव दिख रहा है कि डेड दिख रहा है? Dead person. यस, है ना, इट लुक्स लाइक अ डेड बॉडी, है ना. तो देखो 92 इयर्स ओल्ड लेडी है, विडो लेडी है, जो 14 डेज से कोमा में है.
She was 92 years old lady. She was housewife, and we will see the video. Oh, shit. आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्ले करता हूं मैं. अगर आपको नॉइस नहीं आता है, वॉइस नहीं आता है, तो वीडियो और वॉइस क्लियर? Yes, sir. ओके. Observe the patient. There is no reflexes, no any sensation in the leg, right leg. No sensation, no movements. किती दिवस झाले या कंडिशन? हे तर 4 तारखेला ऍडमिट झालो आम्ही इथे. 4 लाईन. 6-7 तारखेला म्हणजे बोलत नव्हतीच ती. She was admitted since last 11 days, 4 January से 15 January. केव्हापासून बोलत नाही? आलं तेव्हापासूनच. आले तेव्हापासून. इथं होतं की घरी? जब लाए थे तभी वो कोमा में थी. तुमच्या इथे? 2 तारखेला एक कार्यक्रमाला आम्ही गावाला गेलो होतो. तर तिकडनं प्रवास करून आलो आम्ही, तर काही प्रॉब्लेम नाही. 2 तारखेला रात्री. See the big hematoma. Near about half brain covered with hematoma, the blood clot. Hemorrhage in the left gangliocapsular region, 3.4 by 3 by 3 centimeter with perilesional edema and intraventricular extension of the hemorrhage. Infarct in right frontoparietal region and neuroparenchymal atrophy. X-ray right hip joint, minimally displaced complex fracture is seen involving the right femoral neck and great trochanter. HB was 8 and TLC leukocyte count 24,900, neutrophils was 83. So this was the case. तो बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया? यस. क्या क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? The patient unconscious, that is one thing. Yes, very good. She is just breathing with open mouth. Yes, very nice.
Yeah, her eyes are also not open, like Yes. just sleeping closed eyes, Hmm. and there is no movement. No With the- movements in toes, Yeah. legs. Yes. Yes. और And एक, as you reflexes are reduced on the right side. yes. और एक बात थी वहां पे, Yeah. उसका रेस्पिरेशन किसने ऑब्जर्व किया? स्टेथोरस ब्रीदिंग सर. यस. Yeah. और क्या था? Death rattling sound. Yes, rattling sound was there. Yes, very good. A chain stroke. No, that was not Chinese stroke. Chinese stroke में बहुत ऐसा ऐसा होता ना? Yes, yes. थोड़ा little faster it is. Yes. So history of patient. She was admitted at private hospital since 4th Jan to 14 Jan with the exhibiting symptoms such as unconsciousness, vomiting, right hemiplegia, and fracture at the region of neck of femur. She was on following drugs since admitted, like injection augmentin, injection derifylin, in tablet Neuril, Frosalac, Dimox, Dicobal, Iptoin, Dilucin, and IVs, Isolatem and DNS. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. So we will read. Yes, sir. Yes, क्योंकि कुछ अबो लाइंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, टॉप लाइंस, तो आप पढ़िए उधर से. Yes, anyone, read please. Yes, नीलोफर आप पढ़िए. However, due to no response to the मैं treatment देख रहा हूँ given, कि सूट 2000 तक कोई the होएगा तो patient's relative was advised to take discharge. The relative of the patient desired to see the patient, and at the time of my visit, 1 minute, 1 minute. आपका बहुत सराउंडिंग नॉइस बहुत आ रहा है. The patient's relatives was advised to take, yes, doctor advised to the relatives of the patient to take the discharge. The relatives of patient desired to see the patient, and at the time of my visit, the patient was more serious as revealed by unconsciousness, no reflexes at legs. In addition to these, the other symptom observed were rattling of cough due to aspiration pneumonia. Yes, and this is the most common complication of comatose patient. Last में यही होता है, aspiration, and afterward patient will die. Yes.
So with respiration by mouth and mild positive response as opening of eyes for very few seconds. देखो जब मैंने फोर्सफुली, जैसे पेशेंट का जो वहाँ रिलेटिव्स था, उनको कहा कि पेशेंट को आप फोर्सफुली आवाज दो या फिर फोर्सफुली पिंच करो, तो डीप पिंच करने के बाद पेशेंट ने थोड़ा सा स्लाइट रिस्पॉन्स दिया एज ओपनिंग ऑफ आईज फॉर वेरी फ्यू सेकंड्स टू फोर्सफुल अटेंशन drawn by sun, which was followed by deep sleep and snoring. She was kept without fan and totally covered with blanket and wear sweater. Yes, यही कल हमने डिस्कस किया था कि ऐसे केसेस में थर्मल्स देखने चाहिए कि नहीं, राइट? तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट वाज टोटली कवर्ड अप बाय ब्लैंकेट. She was wearing sweater also, without fan, और ऐसे इसमें she was comfortable. So that means she was chilly. अब ये तो हमने देखा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि that she was chilly. तो हमें ये कंफर्म भी करना चाहिए रिलेटिव से. तो बिफोर कोमा she was very chilly. Her mouth was wide open and tongue was white coated. Yes, mouth was wide open and her tongue is totally white. White coating was there. History given by son. Before 50 years, the son was adopted by the patient. Before 50 years. That means his son was 50 years old. And after about 8 years, her husband died. After the adoption, 8 साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. Hence she was living with her son without any complications. About her health, yes. तो अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बहुत रेयरली आते थे. So however, since last 5 years, due to senility, because of old age, she is having dimness of vision. This is senile problem, impairment of hearing and intermittent constipation. इसके अलावा उसे कोई कंप्लेंट नहीं थी. And the nature of patient, she is very mild, introverted, calm and quite lady. Her inclination was towards isolation and aloneness. अब इतने डीप सिपिलिटिक केस है, इतने डिस्ट्रक्टिवनेस की केस है, जहां पे सब तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है. लंग्स डिस्ट्रक्शन, ब्रेन डिस्ट्रक्शन, रिफ्लेक्सेस डिस्ट्रक्शन, सेंसेस डिस्ट्रक्शन. और ऐसे केसेस में हमें हिस्ट्री मिल रही है कि शी इज अ वेरी माइल्ड, इंट्रोवर्टेड, काम एंड क्वाइट लेडी. Is this information is sufficient information? हमें नेचर में क्या ढूंढना है, हमें उसके माइंड में क्या देखना है, क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है. Her inclination was towards isolation and aloneness. Isolation and aloneness, ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है. This is little bit syphilitic. It indicates that syphilis in the form of isolation. That means indifferent to family members, indifferent to loved ones, indifferent to family, likes aloneness, that is indifferent nature. And लेकिन हम
ये सोच सकते हैं, इसे लेना नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस भी ऐसे केसेस में हम नहीं ले सकते जहां इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन है. Yes. So she also kept herself away from family. Yes. Family matters and never interfere in the family matter. She was having more attraction towards a native village, relatives and villagers. ये कॉमन होता है मोस्ट ऑफ द ओल्ड पर्सन्स में कि उन्हें मोस्टली वो जहां पले बड़े बड़े हुए, जहां उनकी लाइफ गई, वहीं उन्हें अच्छा लगता है. इसलिए ये इट इज नेचुरल, कॉमन है ये कि उसे इनके साथ अच्छा नहीं लगता था, उसे उसके वो जो भी विलेज था, खेड़े में जाके रहना बहुत अच्छा लगता था. Now the chief complaints. Chief complaints was semi-unconscious, hematoma left side of brain, hemiplegia right sided, fracture right neck femur, rattling of cuff due to pneumonia and constipation. This was chief complaints. Physical generals was thermal chilly patient, thirstless, stool constipated, perspiration profuse on forehead, and tongue white coated. These are physical generals. घेते. And according to Dr. Vijaykar's 7-layer miasmatic chart of suppression, what is the layer? What is the layer of this disease? 7th layer. 7th layer, sir. 6. Yes. Who says 6th layer? Hariom Singh. Yes. So it is a 6-layer disease. Brain comes into 6th layer. Mind comes into 7th layer. It is destruction of brain, nerves. That is the 6th layer. And miasm is syphilis. Yes, 6th layer neural plate. Now the mental makeup. तो क्या देखा आपने मेंटल मेकअप में? आप सुन रहे हैं ना केस को? Yes. Yes, sir. She Yes, is very mild, introverted, calm, quiet, likes aloneness. Loves nature also, na, sir, उसका. जी? Love nature and village going relatives. हाँ, that is psychosis ना, वो नहीं लेना है हमें. Yeah. या और वो कॉमन है, ओल्ड एज पर्सन्स में वो कॉमन है कि उनको उनका प्लेस जो ओल्ड प्लेस होता है उन्हें अच्छा लगता है. यस. नाउ जनरल मेकअप. Chilly patient, thirstless, perspiration profuse, constipation and severe rattling of cough. Sir, हाँ. तिच्या स्कलला फ्रॅक्चर कसं काय झालं? काय? स्कल फ्रॅक्चर आहे ना? Skull? हा, No. नाही का? Complex fracture of head of femur. फिमर आहे का? Yeah. Okay. Now the physical makeup. She is obese. Obesity was there. Old age, hematoma, hemiplegia, tongue white coated, fracture neck of femur, and right-sided patient. This is physical makeup. And the rubrics, that is semi-comatose, hemiplegia, hemorrhage, destruction, side right,
chilly patient and trustless. From this history, we can get only these symptoms, these rubrics from this case. She was semi-comatose because she gives a mild response, and hemiplegia, paralysis of left side, then hemorrhage, destruction of brain, right side, chilly patient and trustless. So is this sufficient to prescribe the patient? No, sir. Why? डिस्पोजिशन कॉज काय आहे एवढं डिस्ट्रक्शन झालं त्याचं कॉज काय? तो अगर हमने इस सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब किया तो मे बी वी विल गेट partial similimum medicine, because the hemiplegia, it is disease symptom, hemorrhage, it is disease symptom, comatose, it is disease symptoms. तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन डिजीज के लिए होगा, पेशेंट के लिए नहीं. यस. सो तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर विजयकर सर ने कहा है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, नाउ व्हाट इज टू बी डन. तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना चाहिए? इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्या सोचना चाहिए इस केस में, और क्या मिल सकता है? सर जब वो लेडी नॉर्मल थी तब वो कैसी थी और क्या कॉम्प्लिकेशंस आए मेंटल लेवल पे, उसके बाद उसको हमें उसे जीसीएस नहीं देना है. स्टेट रेमेडी देऊन तिला कोमॅटोस कंडिशन मधून बाहेर काढावं लागेल पहिले. यस, हमें उसे स्टेट प्रिस्क्राइब करना है. स्टेट, क्योंकि दिस कंडीशन इज अ, आप ऐसे मोड पे हैं कि थोड़ा सा भी रॉन्ग हुआ कि पेशेंट गया, है ना. शी इज टेकिंग लास्ट ब्रेथ और वहां से हमें उसे खींच के लाना है. तो ऑब्जर्व करके देखना है, जो सिफिलिटिक चीजें दिख रही है उसे लेना. यस, मोर सिपिलिटिक क्या है? क्या क्या देखा आपने मोर सिपिलिटिक को केस में? दुनिया से कट गया ना. यस, दुनिया से कट गई, वो तो ओके, बिकॉज ऑफ कोमा, है ना. तो हम ये कोमा का रूब्रिक्स ले सकते हैं. यस, वेरी गुड. Her looks, sir. You are not audible. Voice is very poor. Oh, sorry. Okay. आ रहा है सर आवाज? क्लिअर तर आहे आवाज. आहे ना क्लिअर? आवाज क्लिअर आहे. हो सर, हो सर. येस सर. मे बी तिकडे नेटवर्क Yes. त्यांच्याकडे नेटवर्क आम्हाला क्लिअर येतोय. ओके ओके आम्हाला येतोय. ओके, थँक्यू. I'll check on my end then. Yes, please. So, what is to be done? According to aphorism number 153, Dr. Hahnemann, आपको दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये स्लाइड दिख रही है ना? ओके. So, Dr. Hahnemann said in 153, take the more striking, singular, uncommon, and peculiar characteristic signs and symptoms. Striking, singular, uncommon, and peculiar characteristic signs and symptoms. So, देखो आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. So where has the patient lost his defense in the syphilitic state? इसका मीनिंग समझ में आया क्या? बोलो.
कि ऐसे सिफिलिटिक केस में मोर क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव, जहां होप 1% होती है, यस, और सक्सेस 99% नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, क्या देखना है, वेयर हैज द पेशेंट लॉस्ट हिज डिपेंस इन द सिफिलिटिक केस। तो देखिए कि उसने उसका डिपेंस कहां छोड़ दिया, लॉस्ट हो गया, कहां हार गई वो, किस कंडीशन पे हार गई। तो वो सिम्टम्स होते हैं स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द पेशेंट लॉस्ट हिज डिपेंस, जहां पेशेंट डिपेंस करना छोड़ देता है। डिपेंस करना कहां छोड़ दिया, जब उसे एस्पिरेशन हुआ, न्यूमोनिया, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस का डेथ ऑफ पोजीशन ऑफ डेथ होता है एस्पिरेशन ऑफ न्यूमोनिया, राइट। कोमा 14 डेज से कोमा में है, बाहर नहीं आई, जहां डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी कि इतना बिग हेमाटोमा विदाउट विथ मेडिसिन क्योर होना ही नहीं है, इसे सर्जरी ही करना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ एज फैक्टर दे आर अनेबल टू डू। यस, तो वो सिफिलिटिक स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, जहां पेशेंट ने उसका डिफेंस छोड़ दिया। So on the basis of this 153, I have selected the rubrics, not medicine. I select the rubrics like unconsciousness, coma, semi-consciousness, conscious when spoken to. जब मैंने स्ट्रेसफुली उसे पूछा तो उसने जस्ट एक नॉइस किया, दैट इज शी ओपन्स हर आईज एंड अगेन क्लोज द आईज इन द नेक्स्ट सेकंड। सो दैट वाज अनकॉन्शियसनेस, कोमा, सेमी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस व्हेन स्पोकन टू। This is a striking, singular, uncommon rubric. Answers to for returns quickly after. जैसे उसने आंसर दिया, again she goes into deep sleep and snoring was there. Respiration, rattling, chilly and thirstness. So these three rubrics was selected. Unconscious, coma, semi-consciousness, conscious when spoken to, answers to for returns quickly after, and respiration rattling. तो मैंने कहा था कि ऐसे केसेस में ऑब्जर्वेशन बहुत मस्ट होता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किस तरह से केस को देख रहे हैं। बहुत ही आप प्लीज म्यूट रखिए खुद को। मैंने सबको म्यूट किया है, लेकिन आवाज कहां से आ रहा है। तो ऐसे केसेस में 1 और 2 सिम्टम्स ही होते हैं जो हिडन होते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ओनली 1 और 2 सिम्टम जो स्ट्राइकिंग होते हैं, पिक्यूलियर होते हैं, अनकॉमन होते हैं, रेयर होते हैं, और वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो दीज आर द, और ये टोटली डिपेंड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन ओनली। यस, सो आफ्टर this I got a remedy.
रुब्रिकची स्लाइड असेल तर शो करा ना सर, आम्ही लिहून घेतो रुब्रिक्स. हा हे करतोय ना, बघा ना. सो unconscious, coma, semi-conscious, answers to call returns quickly after, and rattling of cough. These 3 rubrics. सर रुब्रिक की स्लाइड वही दिख रही है. हाँ, मैंने वही तो पूछा था कि आप लोगों को स्लाइड दिख रही क्या? नाही सर, नाही दिसत आहे. अभी रेपर्टाइजेशन टेबल आपको दिख रहा है? यस सर. दिख रहा है अभी. अभी ये रूब्रिक्स देखो, रेपर्टाइजेशन के लिए जो रूब्रिक्स सिलेक्ट किए वो रूब्रिक्स आपके सामने ये रहे, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं? यस सर. ओके, सो रेपर्टाइजेशन टेबल दिखाऊं? Yes, sir. So after repertorization, I get antim, tart, and nux omega. So which is the remedy, antim, tart or nux omega? हमने एनालिसिस में देखा था कि वेरी इरिटेबल एट द लास्ट हमें रेमेडी सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन. सो नक्स ओमिका's disposition is very angry, irritable, and she was very quiet, simple lady, है ना? So और एंटिम टार्ट डिस्पोजिशन लाइक्स अलोननेस, है ना? यस. Isolation, desire for antim tarts, 3 marks rubric, 3 marks symptom. So antim tart 200 was given. जान को एंटिम टार्ट 201 dose was given. And see the follow. Yes. Dose was given in the form of pill or water dose? No. कोमेटोस पेशेंट को मेडिसिन कैसे अप्लाई करना है? रिस्ट पे एक तो रबिंग ऑन द स्किन भी रहता है सर. यस, अप्लाई ऑन द स्किन ओनली. राइट हैंड के राइट रेडियल आर्टरी के ऊपर पेशेंट को अप्लाई किया 200 डाइल्यूशन. यस सर. ओनली सिंगल टाइम. But sir, some apply on the forehead, some apply on the palm of skin, or how it is? स्किन पे कहीं पे भी Depends. करो, नो प्रॉब्लम. Okay. आप स्मेल भी दे सकते हैं, ऑल्फैक्शन भी कर सकते हैं. Now see the follow. Not visible, sir. 1 minute. Processing. अजय जीप दाखवा. जीप विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस? Yes. बोलिए. आफ्टर 2 days, 15 को मेडिसिन दिए, 17 का फॉलोअप है. 15 के बाद 17 का फॉलोअप है.
क्या देख रहे हैं आप? सभी कोमेटोस कंडीशन से वो कॉन्शियस स्टेज में आया। Yes, patient is fully conscious. अजय जीभ दाखवा, जीभ आ करा, आ करा, हा कसं वाटतं सांगा? हा सांगता येत नाही काय? नाही. She can understand the questions also, commands also. Yes. Comprehension. Yes. Within a 2 days, जो 14 days से कोमा में थी, 2 दिन में ही कोमा से बाहर हो गई, completely conscious हो गई. She can understand the questions, commands. Yes. But still tongue was white. हात वर कर. ठेव पोटाला, बरोबर आहे ते. व्हेरी गुड. See the rattling. Rattling सुने दे रहा है आपको? Yes, sir. It is slight increased. Now see the face. आपको फेस कैसा दिख रहा है? It is little but swell, edematous. पायाचे बोट हालव करा असे असे. Movements in legs, paralyzed legs. Now see the report. HB 8 था, 8.5 हुआ. Then TLC was 24,900 शायद. Now it is 17,100 and TLC was 85. Now it is 90. So what is this? HB बढ़ गया 0.5%. It is good. TLC कम हुए, it is good, but neutrophils बढ़ गए. Is it right? Psychosis. Yes. It is good, sir, It is because because primary response is coming back again. yes, primary response is coming back again. Primary response, that is the SORA is SORA. Yes, that is the SORA is coming back. Right? TLC is a psychosis and neutrophils is a SORA. So SORA is restoring there. It is a good sign. And the swelling on the face, it indicates that the internal swelling of brain is coming outside. So inside to out, from more important to less important skin is a good sign. देखो हेरिंग्स ला कहीं पे भी दिखने को मिलेगा आपको, खाली आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हेरिंग्स लॉ देखना है. यस, हेरिंग्स लॉ आपको ब्लड रिपोर्ट्स में दिख रहा है, हेरिंग्स लॉ आपको फेस पे दिखा. यस. Now the second follow. अजय
Now see the response of the patient. Aji. Quick response. I called her Aji and see, part se. Quick response. Again see the face swelling और बढ़ गया थोड़ा. कसं वाटतंय? चांगलं कैसा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा. नाही लागत. बरं, जेवण केलं का? नाही केलं. बर. खाना खाया क्या नहीं खाया? She can understand, है ना? और सही जवाब दे रही. देखो, खाना खाया क्या नहीं खाया? क्यों? Yes. Rice tube है. Because of rice tube, है ना? उसको rice tube से दिया तो पता नहीं चलेगा, इसलिए. काय होते सांग? हा? काय होते तुला? सांग. ये 6 डे का आफ्टर द मेडिसिन 6 डे का फॉलोअप है. संडास झाली का संडास? तो काय? आपने देखा पहले लेग्स पे स्वेलिंग था? No, sir. No sir. Now swelling on legs, that is above downward. Right? देखो Hering's law. And this is left leg. Paralysis का leg है ये. Now the fourth follow. What is this? Bed sore है उसका. Bed sore है. जो डीप था, देखो आपको यहाँ पे भी हीलिंग दिख रहा है. Dressing with just normal saline. No any ointment or any liquid like betadine or Savlon. Only saline wash. Now she can sit. दोन्ही हलो. जरा जोराने हलो ना असे हलो जोराने. Both legs are okay. घे. ठीक आहे ते पिकत आता. See the paralyzed hand. She can drink water. This is a 12-day follow. Now she can take orally. Yes, the 27 January का follow up है. After this is now. Yes.
Sir, what about allopathic medicines? ये सब चालू ही था क्या during? नो नो, उसे कंप्लीट स्टॉप किया था. Now I will show you the last follow-up after the 5th month. पांच महीने बाद देखो उसका फ्रैक्चर के क्या हाल हुए, उसके पैरालिसिस के क्या हाल हुए. थोडंसं व्यवस्थित कसं वाटतंय? काही वाटत नाही. See the face and voice. Voice कितना क्लियर है, कितना स्ट्रॉन्ग वॉइस है. उसका फेस देखो. नाउ द फेस बिकम्स sorosipilytic. Yes. Now the face becomes sorosipilytic. नाही का? बरं. उभं राहायचं आहे ते. राहता येते? इकडनं बाहेर यायचं. Fracture also healed with that medicine, single dose of antiviral, without any surgery. Yes. She can walk, stand. तुम्हाला तसं बरं वाटेल का? खूप छान, खूपच छान. बोलते स्पष्ट समजते, सेन्सिजन आहे 100%. गावी जायचं का? गावी जायचं? गावी म्हटलं जायला ताबडतोब बसते, चला म्हणते ताबडतोब. झोपा. Yes. So this was the case. Very nice, sir. Yes. So antim-tart. Sorry. Antim-tart. Single dosing. Antim-tart acts on the parasites by stimulating the oxidizing action of the protective substance. देखो, oxidizing action of the protective substance. Which is the protective substance? That is the blood. Defective oxygenation. Defective oxygenation in the circulation of blood causes cyanosis and the depression of vital power. Elements from anger, vexation, debility, debauchery, vaccination. Great despondency, winning, moaning, muttering, delirium, and stupor. Amelioration by expectoration. Irresistible desire to sleep. Drowsiness, prostration, lack of reaction. Death rattle. That rattling was death rattle. And great accumulation of mucus with little expectoration. उसे एक्सपेक्टोरेशन नहीं था, लेकिन इतना रैटलिंग था, ऐसे दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि कितना कफ है चेस्ट में. फेस हिपोक्रेटिक. आपने जो फर्स्ट मैंने पूछा था कि ये डेड लग रही है कि लाइव, दैट फेस वाज हिपोक्रेटिक फेस. कोल्ड ब्लू, पेल, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट. Tongue coated, pasty, thick, white with reddened papilla. Excessive weakness, perspiration, sleepiness, and irritability. This is the trio of antim-tart. Excessive perspiration, excessive weakness, and excessive cough. Nausea and frequent vomiting with deathly faintness and sleep. Chilly, thirstless, sips of water often, and aversion to meat. This is the antim-tart.
And the follow-ups. First, we will see the aphorism 154. 154, what Hahnemann said in 154. If the antitype constructed from the list of symptoms of the most suitable medicine contain those peculiar, uncommon, singular, and distinguishing characteristic symptoms which are to be met with in the disease to be cured in the greatest number and in the greatest similarity. This medicine is the most appropriate homeopathic specific remedy for this morbid state. Yes. So our antidote is not it according to this 154. Yes, this is the perfect 154 aphorism number 154 रेमेडी जो हैनेमन ने कहा है कि जो भी peculiar, uncommon, singular and distinguishing symptom होता है, that was our rubric. So remedy for this morbid state, the disease, if it be not one of very long standing, will generally be removed and extinguished by the first dose of it. ऐसे केसेस में जब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि राह देख रहे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम आपके पास होता है और पेशेंट के पास भी कम टाइम में हमें चमत्कार दिखाना होता है, जो हैनेमन ने कहा है. यस, ओनली फ्यू डेज हमें दिए जाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, और हैनेमन ने वही कहा है कि इन शॉर्ट डेज में ही हमें फर्स्ट डोज से एक्सटिंग्विश्ड बाय फर्स्ट डोज ऑफ इट. यस, एक ही डोज में उसे स्टिमुलेशन होना चाहिए वाइटल फोर्स को, और वाइटल फोर्स गेट स्टिमुलेटेड एंड गिव द सरप्राइजिंग रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट. यस, सो ये सब देता है हमें ऑर्गन, ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग सब मिलती है ऑर्गेनन से. अगर ऑर्गेनन की स्टडी परफेक्ट हो तो किसी भी केस में, कितने भी डिफिकल्ट केस हो, कितने भी क्रिटिकल केस हो, अगर आप 100% कंसाइंशियसली ऑर्गेनन फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलना ही है. यस, so see the change in the patient. This is first visit, this is second visit, this is third visit, this is fourth visit, and this is the fifth. See the change. Now follow-ups. Follow-ups में क्या क्या changes मिले थे? Oxygen inhalation 3 liters per hour, BP 160/90, fever 101 degree Fahrenheit, on and off. Cup increase, yes. First follow-up में cup was increased, conscious level increase, movement of extremities, start response to stimuli, sputa thick yellowish, RT feeding 3 liters per day with milk, juice and coconut water. Second follow-up, no fever, urine output increase, cough bouts increase with profuse sticky discharge, conscious level more better, giving and answers to questions, swelling on legs, motion pass, bed sore on gluteal regions. She was asking about her son. She can sit on bed without support. Yes. Talking improved, cough decreases, sputa decreases, bed sore healed, good improvement, good movements of paralyzed hand and leg, feeling pain in leg at fracture site. Yes,
This is again a good sign. That means sensations are well balanced in talking and sitting, taking and sitting. She said that I want to go at my village. Today she was recharged. And the last, she is completely okay. She can stand and walk without support. No pain in fracture leg, fracture healed completely. Paralysis cured, pneumonia disappeared without reappearance. Her look is become sorrow syphilitic with only one single simple medicine without repetition. Yes, this was the result, and thank you very much. तो बताइए, who would like to share about this case? What you have get from this case? What is your understanding about this case? Yes, Dr. Sandhya. हाय सर, गुड इवनिंग। Hi, good evening. सर बहुत ही अच्छा केस था एंड मैं भी एक ऐसा ही केस के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने इसी तरह से एक पेशेंट को विजिट किया था एंड एट दैट टाइम मुझे कुछ रूब्रिक इतना क्लियर नहीं हुआ उस समय, बट अभी मुझे वो रिकलेक्ट हो रहा है कि जैसे ही मैं एंटर हुई थी तो जो पेशेंट थी ओवरवेट थी, वैसे ही जो उनको कफ का और ये सब प्रॉब्लम हो रहा था एंड जैसे ही उसने मतलब लाइक जैसे डॉक्टर को देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, जैसे मुझे बचा लो या मुझे देखो, मुझे ऑब्जर्व करो। स्टिल अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि इस टाइम किस तरह से हमें रूब्रिक्स को किस तरह से मतलब मेडिसिन तक पहुंचना है, बट इससे मुझे काफी हेल्प मिला। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। तो ऐसे केस में एक्चुअली टोटली डिपेंड होता है हमारे ऑब्जर्वेशन पे। पेशेंट की हिस्ट्री टोटली डिफरेंट हो जाती है और हमारा ऑब्जर्वेशन टोटली डिफरेंट हो जाता है। पेशेंट की हिस्ट्री मोस्टली ऐसे केसेस में मिलती ही नहीं है, और पेशेंट के रिलेटिव जो हिस्ट्री देते हैं उनको लगता है पेशेंट मर रहा है, कहाँ इसके बारे में बुरा बताना। वो रियल बताते ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही बताते हैं, है ना। इसलिए वो हिस्ट्री हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। हमें जो दिख रहा है, हमारे सामने जो प्रेजेंट है, उसमें से हमें पिकअप करना होता है। यस यस। किसी ने पूछा है, स्टिल द पेशेंट इज अलाइव? नो, शी वाज 92 years at that time, and after 7 years she died at the age of 99 with a natural death. Yes. तर त्याच्यानंतर मग तिला जीसीएस दिलं का की? No, कभी काम ही नहीं पड़ा. अच्छा अच्छा, ओके. She was in my touch but never मतलब कभी कुछ काम ही नहीं पड़ा उसको कभी कुछ देने के लिए, लेकिन she was in touch. Yes. Yes. और कोई? उसका जीसीएस क्या रहेगा सर? जीसीएस आप बोलिए, जीसीएस एंटिम क्रूट के करीब ही होगा। ये अपने को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? हेलो आप, अगर उसे कुछ होता था तो आई विल मोस्ट प्रिस्क्राइब mostly think about natrums. Natrums and antims are more close to each other. Both are introverted, non-diligent. Both groups likes aloneness. Yes. हेलो सर. Yes. इनिशियल डेज के प्रैक्टिस में मेरे पास ऐसी केस आई थी सर, 2008 की बात है.
पेशेंट को राइट साइडेड ट्यूमर विथ कैल्सिफिकेशन विथ नेक्रोसिस था। अब अपना वीडियो ऑन और हेलो सर, मैं घर के कपड़ों पे ओके। हाँ, तो राइट साइड ट्यूमर विथ कैल्सिफिकेशन विथ नेक्रोसिस था, 2008-9 की बात है। और पेशेंट कोमा में थी। मैं उनके घर में विजिट दिया था, उनके हस्बैंड आए थे, उनके ब्रदर आए थे। और तब मुझे कुछ उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने पूछा कि प्रीवियसली कैसे थे। तो बोले इनकी शादी एट द एज ऑफ 38 में हुई, और इनकी शादी उनसे हुई जिनकी पहली वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो और इनके हस्बैंड भी इनसे प्रॉपरली बिहेव नहीं करते थे, ऐसी कुछ हिस्ट्री मुझे मिली थी। तो मैंने नाइट्रोमूर 200 सिंगल डोज दिया था। उस वक्त मैंने टंग भी दिया था सर, ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो उस पेशेंट में बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। 2 से 3 महीने के बाद वो पेशेंट चल के क्लिनिक आती थी। उसके बाद वो 4 साल जिंदा रही सर। उसके बाद बहुत उसकी अच्छा। डेथ हो गई। बहुत अच्छा, 4 बहुत साल बढ़िया। रही वो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी समझ में आता है। आपने बोला ना कि नाइट्रामोर उसके रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है वो पार्शियली काम किया होगा उस वक्त। यस यस यस। सो 5:45 हो गए। सो आज बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा। यस यस, थैंक यू वेरी मच। कल Thank you, हम sir. थैंक यू। कल हम वापस एनालिसिस देखेंगे। Sir. एनालिसिस ऑफ स्लो प्रोग्रेसिंग केसेस का हम एनालिसिस देखने वाले हैं कल। ओके, don't miss Thank the you. classes. Yes, thank you very much. Thank you, Thank sir. you. Excellent, sir. Bye Excellent. bye. Very Bye bye. Bye bye. Thank you.